We are going to study the female reproductive organs today. And in that, ovary, uterus, uterine tube. Okay? Development of uterus is from paramesonephric ducts. In the nephrogenic cord, that thickening of the intermediate mesoderm, there were four structures. Gonadal ridge, then mesonephric tubules, mesonephric, metanephric, pronephric. Then mesonephric duct and paramesonephric duct. This mesonephric duct forms ureter in both the sexes. In males it forms majority of organs. So females में ureter के अलावा it just remains as a Gartner's duct. I'll talk about the broad ligament of uterus. That time you will have to understand it. So now these are this paramesonephric duct. One on the right side and one on the left side. These two paramesonephric duct partially unite. They unite. No talking. They unite. Two paramesonephric ducts, their lower portions unite. The united lower portion forms the uterus. Ununited portions form the uterine tubes. United portion forms the uterus. So what ducts are these? Akshata, what are these ducts? Paramesonephric ducts. Their lower portions unite. United portion forms uterus. Ununited portion forms uterine tubes. Now because uterus is derived from two structures, तो इनिशियली उसके बीच में एक ऐसा सेप्टा होता है, वो डिजॉल्व होता है. वो नहीं डिजॉल्व हुआ तो देयर कैन बी सेप्टेट यूटरस. यूटरस के बहुत एनोमलीज हैं. एक साइड पे ट्यूब रहता है, सेप्टेट यूटरस. दीज आर द एनोमलीज ऑफ द यूटरस. Now before discussing the uterus, we will discuss the ovary. Now uterus, normally if I have to describe the uterus, I take this position like this. So this is the fundus of the uterus. These are the two uterine tubes. Okay. And this part is the body. Lower part is cervix. My legs, they will be kind of representing the vagina. So let me talk about the uterus only first, and then I'll be able to give you an idea about the ovary also. So uterus, so suppose this is the vagina. Okay. Here is the urinary bladder and the 4 centimeter urethra in case of females. Uterus, the cervix, it makes an angle of 90 degrees with the vagina. Cervix makes an angle of 90 degrees with the vagina. This is called as angle of anteversion. Angle of anteversion. You remember there are two, anteversion, anteflexion. So with V, vagina, it makes angle of anteversion. Version. And then
the cervix makes an angle of anti-flexion, which is 135 degree. So this is the fundus, this is the body, this is the cervix. So body and cervix, they make an angle of 135 degree with each other. So uterus is like almost over the bladder. इतना आगे नहीं रहता है, यहाँ तक पकड़ो इसे. Okay. So that is the reason when a female becomes pregnant and the developing embryo is implanted here, in the initial stages the uterus may, because of the weight, may press upon the urinary bladder, because relation देखो bladder और uterus का इतना सा है. So because of that pressure, a female can get frequency of micturition. फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन मतलब उसको ऐसा बार बार ऐसा फीलिंग आता है कि बाथरूम जाओ और कुछ नहीं होता. टॉकिंग अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द यूटरस is 1 inch thick, 2 inch broad and 3 inch long. 1 inch thick, 2 inch broad and 3 inch long. थ्री इंच कितना होता है? 3 इंच इतना मैक्सिमम. 6 इंच का अपना उसका हाफ, 6 इंच का हाफ स्केल रहता था कंपास बॉक्स में. so, मतलब इतना सा. नाउ दिस यूटरस, when a female becomes pregnant, it comes right up to xiphoid process. After the baby is delivered, again it becomes 3 inch within few months. So it's a very amazing organ. Word used for uterus another is so anything related to word we call as hysterectomy. So some female behaving in an abnormal way, it is called as hysteric behavior. Okay. That means if I have to show the position of the uterus like this, so uterus is somewhat like this. The fundus is here, so making angle of 135 here, body suppose, and with the cervix making with the vagina angle of 90 degree. Okay, this whole arrangement is there so that the uterus doesn't prolapse through the vagina. Okay. Now let us check the parts of the uterus. So this is the fundus. Now these uterine tubes are described separately. We don't describe it as part of the uterus. Okay. Then body and lower part is cervix. Okay, there is opening here called as external os, and here is the vagina. This part is the vagina. Cervix ये उसका कैविटी है. So this is cervix, this is body, this is fundus. Cervix has two parts, vaginal part, which is actually inside the vagina, thoda sa, and this part of the cervix is supravaginal part. So vaginal part of cervix and supravaginal part of cervix. This on the side, you are seeing the gaps. These gaps are called as fornices. Fornix. So these are the two lateral fornices. And in the previous diagram which I had drawn,
where this was the vagina and this was the cervix. So this is anterior and this is posterior. So here is anterior fornix, posterior fornix. So there are spaces around the cervix. Cervix slightly projects into the vagina. So there is anterior fornix, posterior fornix, two lateral fornices. Fornices are the spaces. So there are 4 fornices around the external os, around the vaginal part of the cervix. Okay. Now the peritoneal relation. So the peritoneum falls like this on the bladder superior surface, then goes like this, then goes here behind the rectum. So fundus is covered by peritoneum. Fundus is covered by peritoneum, this part. So this is peritoneum. Fundus and body, they are very closely related to the superior surface of the urinary bladder. Superior surface of the urinary bladder. The body posteriorly will be related to the coils of ileum. By now you have realized कि किधर भी कुछ आपको याद नहीं आया तो coils of ileum होता है relation में. Okay. Now some part of the cervix, body, they are related to the urinary bladder anteriorly. Now this will be the base of the bladder. So fundus and part of the body will be related to the superior surface, while the cervix and vagina, they will be related to the posterior surface of the bladder. Posterior surface of the bladder. And posteriorly, it will be related to the rectum. Okay. Now coming to the blood supply of the uterus. The blood supply of the uterus is by the uterine artery, which is the 7th branch of the anterior trunk of the internal iliac. By now you have realized internal iliac, which has an anterior trunk and a posterior trunk. We have already studied branches of anterior trunk in the last lecture. They were superior vesicle and inferior vesicle, and today in females, normally there are 6 branches in males. In females there are 7 branches for the anterior trunk. Okay, and the 7th branch, extra branch in female, is the uterine artery. Uterine artery. This uterine artery runs like this. Runs like this, and it is tortuous. It has a tortuous course. So by now you have studied facial artery, which is tortuous. Which? Splenic artery. क्योंकि पेट बड़ा होता है, मुंह खोलते हैं, फिर पेट बड़ा होता है और यूटरस भी बड़ा होता है. इसके लिए यूटरस is supplied by uterine artery, branch of the anterior trunk of the internal iliac. Okay. Now before we go ahead, in the peritoneal relations, there is something called as the broad ligament. And to explain that broad ligaments, I had asked for some chundaris. मेरे को एक वॉलंटियर बॉय चाहिए. आज सबसे लेट कौन आया रे? कौन आया लड़का? अभी अभी दे दे. थैंक यू. वॉलंटियर कौन करेगा? बिफोर आई. एप्रन किसने नहीं पहना है उसको मैं वॉलंटियर बनाने वाला हूँ. तो ग्रीन टी शर्ट आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. नहीं एप्रन छोड़, तो आ जाओ इधर आगे. जस्ट टू एक्सप्लेन द कन्सेप्ट एंड यू विल अंडरस्टँड इट बेटर. नाव काय तुझं? हां, ओजस कुठला आहेस तू? ओके, सर उभा. द युटरसची पोझिशन अशी. ओके. नाव अरे असं उभं असं. Now we are talking about broad ligament of the uterus.
to understand the broad ligament of the uterus, it has two layers, anterior and posterior. Okay, and these anterior and posterior layers, they run like this. So this is the anterior layer and this is the posterior layer. Now where is the ovary? The ovary is in the posterior layer. एक मिनिट, सॉरी माझा हे तुझं पाय जरासं उचल एक, ठीक, जरासं आता साईडला हो असं, हां. So ovary is in the posterior layer like this, surrounded like this. तो हात खाली केला चालेल, तो खाली, हा राहू दे. हे बघ इकडे बघ, तुला बघितलं पाहिजे, इकडं आपल्या कॅमेऱ्यात पण दिसलं पाहिजे. So this is the ovary. So then ovary is covered by the peritoneum and this, it goes towards the posterior wall. This is called as mesoovarium. This is called as mesoovarium. तू इधर, तू उभा रहा, ऐसा हाथ आगे कर, तिकडे बघ. So anterior and posterior layers of the broad ligament. This is the ovary. Ovary is slightly behind in the posterior layer. वो भी थोड़ा सा पीछे रहता है. So then there is a layer of the broad ligament which runs from ovary to the posterior layer. And that is called as mesoovarium. Now the ovary is connected to the lateral pelvic wall by suspensory ligament of ovary. जरा सा हाथ ऐसा रखने का तो, हाँ. So ovary ऐसा है, तो lateral wall पे से, lateral pelvic wall पे से एक ligament आता है, infundibulopelvic ligament. I am going to draw that for you. Okay, and uterus के angle से भी एक ligament आता है, ligament of ovary. So kind of there is a triangle like this formed by uterine tube, suspensory ligament of ovary, ligament of ovary. So this part of the broad ligament is called as mesosalpinx. Tubes, salpingitis, tubes, anything related to tubes is salpinx. And the lower part, जरा सा हाथ वरती, lower part below the ovary, below these two ligaments is called as mesometrium. So there are three parts of the broad ligament: mesoovarium, mesosalpinx, mesometrium. चलो, थैंक यू. उसके लिए तो ताली बजाओ, और जानवी के लिए भी ताली, और जानवी के लिए भी. नहीं, आजकल मेरे को बिफोर हैंड इन्फॉर्म करना पड़ता था. 25 साल पहले मैं सिखाता था तो सारी लड़कियां चुंदरी के साथ तो मांगते थे, तो ऐसे फेंकते थे. अभी वो ज़रा सा रेयर सीन हो गया. एक तो मेरे को मालूम है, एक तो आपको रखना पड़ता है बिकॉज एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के दिन. ओके, सो नाउ so uterine artery is content of that broad ligament. After this you will understand the ovary in a better way. इसके लिए मैंने यूटरस का थोड़ा सा आपको आइडिया दिया. So here is the ovary like this. Inside the broad ligament in the posterior layer. So part of the broad ligament between these two ligaments, understand their names. बात मत करो, वापस वॉलंटियर मैं बना दूंगा इधर क्लास खत्म होने तक. Ligament of ovary, this is ligament of ovary, this is infundibulopelvic ligament. So broad ligament ऐसा है साइड पे, खाली नाम के लिए ब्रॉड है. इट इज़ नॉट अ ट्रू सपोर्ट ऑफ द यूटरस. इट रन्स फ्रॉम द यूटरस lateral walls like this to the lateral wall of the pelvis. One content, एक तो ovary is one of the content, uterine artery is one of the content. Ovarian artery जो है ना,
ओवेरियन आर्टरी इसमें आता है, लाइक दिस, इट कम्स इनसाइड हियर टू सप्लाई द ओवरी, सप्लाइज द यूटराइन ट्यूब ऑल्सो, lateral 1/3, or uterine artery supplies the medial 2/3. So that's how the uterine tubes are supplied. So what is this part of the broad ligament called? Mesosalpinx. So this is mesosalpinx, this is mesometrium. ओके, नाउ आई विल ड्रॉ अ डायग्राम टू एक्सप्लेन टू यू. अगर मैं कट सेक्शन लेता हूं तो दिस इज एंटीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, दिस इज पोस्टीरियर लेयर, और ये पोस्टीरियर लेयर से ओके, सो दिस इज एंटीरियर लेयर, दिस इज पोस्टीरियर लेयर, दिस इज द ओवरी. सो व्हाट इज दिस? मीजो ओवेरियम. ओके, सो पोस्टीरियर लेयर और उसके पीछे ऐसे मीजो ओवेरियम. सो दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट. 2 लेयर्स जो मैंने अभी आपको हाथ पे से गिराकर, चुनरी गिराकर जो दिखाया, एंटीरियर लेयर ये है, पोस्टीरियर लेयर ये है, और पोस्टीरियर लेयर के एक छोटा सा ये पीछे जाता है पार्ट, दैट फॉर्म्स द मीजो ओवेरियम. यू आर विथ मी ऑन दिस? ओके, सो I have explained to you. Now the contents of the broad ligament. एक तो uterine artery, ovarian artery, ovary, then Gartner's duct. ये क्लास के शुरुआत में मैंने ये वर्ड यूज किया था, Gartner's duct. It is a remnant of mesonephric duct. Remnant of mesonephric duct. Because mesonephric duct को कुछ काम धंधा है ही नहीं फीमेल्स में. No vas deferens, no epididymis, which it forms in males. So it remains in the broad ligament as Gartner's duct. Wearing apron is voluntary since AC is not working. Okay. Now ipooforon, paraooforon, ऐसे words आप सुनोगे. These are the remnants of mesonephric tubules. These are the remnants of mesonephric tubules. Mesonephric tubules in males form rete testis. Metanephric tubules form kidney. Mesonephric tubules, they just, because pronephros, mesonephros doesn't contribute to the kidney, but mesonephros in males forms the vasa efferentia, rete testis, rete testis से भी more specific is vasa efferentia, which connect the rete testis to epididymis, the head of the epididymis. So that vasa efferentia is formed by mesonephric tubules. Now in females, mesonephric tubules just formed, so Gartner's duct ऐसी रहेगी, then ovary के आजू बाजू में इपो मतलब अब paraooforon ऐसे कुछ आपको tubules जैसा दिखेगा. They are the embryonic remnants of which tubules? Mesonephric tubules. Okay. Supports of uterus is a very important topic. कहीं ना कहीं प्रीलिम्स, यूनिवर्सिटी, और नहीं हुआ कहीं पे तो थर्ड ईयर में तो पूछता ही है. बिकॉज दिस यूटरस नॉर्मली तो ऐसा है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 3.5 से 3.5 किलो का बच्चू उसके अंदर है. सो देयरफॉर दिस यूटरस रिक्वायर सपोर्ट. ओके, एंड दिस सपोर्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, true supports and false supports. Or before I go for the supports, I want to explain to you the lymphatic drainage, because ये डायग्राम मुझे वापस नहीं ड्रॉ करना है. Now you are looking at the uterus from the top. ऊपर से आप देख रहे हैं, ऊपर से. ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है. ये पीछे क्या है? ओवरी. ओवरी है. ये ओवरी का नीचे का एंड,
Now ovary be na, when I'll explain the ovary, I'll tell you. In a nulliparous who has not given birth to a child through her own uterus, આજકાલ because of surrogacy I have to be very specific, through her own uterus. In a nulliparous, the ovary is in this position. In a multiparous, the ovary is horizontal. तो ये जो सुपीरियर पोल है ना वो लैटरली आ जाते हैं. ओके, एंड द रीज़न इज बिकॉज एक बार डिलीवरी हो गया जिसमें यूटरस इतना ऊपर तक गया, तो ये दोनों लिगामेंट जो ओवरी को ऐसे पकड़े रहते थे वो दोनों लूज हो जाते हैं, स्पेशली ये भी लूज हो जाता है. ओके, एंड देन ओवरी जस्ट बिकम्स हॉरिजॉन्टल. So by that one can understand whether the ovary is horizontal or ovary is oblique, whether she is a nulliparous or multiparous. Now you are looking at the uterus from the top. What is this ligament which runs from the lower end of the ovary to the uterus? What is that ligament? Ligament of ovary. What is the other ligament? Infundibular, suspensory ligament से भी infundibular pelvic ligament. What is the content of infundibular pelvic ligament? Ovarian artery. Ovarian artery is a branch of aorta. Uterine artery is a branch of anterior trunk of the internal iliac. But ovarian artery is a branch of gonadal artery. Testicular artery वैसे ही ओवेरियन आर्टरी. सो एक लिगामेंट ऐसा रन होता है और यहाँ से दूसरा लिगामेंट चालू होता है जो आगे जाता है, मतलब यूटरस के एंगल से बट एंटीरियरली आगे जाता है, लेबिया मेजोरा को जाके अटैच होता है. बोलो लिगामेंट का नाम क्या है? round ligament of uterus. Round ligament of uterus. So this ligament starts from the angle of the uterus. So this is the angle of the uterus. Starts from the angle of the uterus, goes ahead, goes through the inguinal canal and gets attached to labia majora. Labia majora corresponds to which part in males? Scrotum. So which is a structure which runs from the testes to the scrotum in the embryonic life? Gubernaculum. Gubernaculum runs from the testes to scrotum. वो धीरे धीरे शॉर्टन होता है तो टेस्टिस. This is the gubernaculum of the ovary. Now what happens is the gubernaculum of ovary is divided into two parts because of the attachment to the uterus. इकडे बघा सगळ्यांनी. Gubernaculum is divided into two parts. One part is ligament of ovary which runs from ovary to uterus, and second part is round ligament of uterus which runs from uterus to labia majora. And because of this the ovary does not descend. Testes descend, but ovary does not, because that gubernaculum splits at this point. It splits into two parts. Ligament of ovary which runs from lower end of ovary to ligament of ovary runs from the lower end of ovary to angle of the uterus, and round ligament runs from angle of the uterus via inguinal canal to labia majora. You got this? Why the ovaries don't descend? Okay. Now lymphatic drainage of the uterus. The lymphatic drainage of the uterus, fundus and upper part of the body go to para-aortic lymph nodes. Go to para-aortic lymph nodes. मुझे याद दिलाना है आपको सपोर्ट्स ऑफ यूटरस के बारे में. para-aortic lymph nodes. Lower part of the cervix goes to internal iliac lymph nodes, because ये actually
एकदम डीप इनटू द पेल्विस है. अपर पार्ट ऑफ द बॉडी गोज टू एक्सटर्नल आइलियक लिम्फ नोड्स. एकदम ये वाइवा के लिए बनाया है लिम्फेटिक ड्रेनेज. एंगल से क्या चालू हो रहा है? एंगल से कौन सा लिगामेंट चालू हो रहा है? ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस के अराउंड लिम्फेटिक्स होते हैं. एंगल ऑफ द यूटरस via the lymphatics around the round ligament of uterus drain into superficial inguinal lymph nodes. तो फंडस इंटू पैरायोर्टिक. आपके बाजू की लड़की लिख रही है, क्या कर रही है? फंडस इंटू पैरायोर्टिक. एंगल ऑफ यूटरस ड्रेन्स इंटू सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स. डॉक्टर यादव, so angle of the uterus drains into superficial inguinal lymph nodes via lymphatics around the round ligament. Okay. Lower part, upper part of the body into external and internal both, and cervix drains into internal iliac lymph nodes. Clear? Lymphatic drainage. ब्लड सप्लाई भी मैंने आपको बताया. यूटराइन आर्टरी. ओके. सपोर्ट्स ऑफ यूटरस अभी भी बाकी है. बिफोर दैट आई हैव टू कवर दिस यूटराइन ट्यूब. इधर तक आ ही गया तो आई वुड लाइक टू कवर द यूटराइन ट्यूब. यूटराइन ट्यूब is 4 inch long. 4 inch long. फोर इंच म्हणजे 10 सेंटीमीटर. बरोबर. फंडस इज हाउ मच ब्रॉड? 2 inch. So transversely 4 inch plus 4 inch plus 2 inch becomes 10 inches. 4 inch बीच में फंडस 2 inch. एंड देयरफॉर क्लासिकली जो हम ऐसा ड्रॉ करते हैं वैसे ये पोजीशन नहीं रहता है बॉडी में, because the longest transverse diameter of the pelvis is 5 inches. pelvis का diameter is 5 inches, जिसमें हमारा एक स्ट्रक्चर है 2 इंच 4 इंच 4 इंच. इसके लिए ये जो हम डिस्क्राइब करते हैं ऐसा नहीं रहता है, तो ये और 5 इंच में 10 इंच का स्ट्रक्चर बिठाने के लिए ऐसे ऐसे. तो आप जब पढ़ोगे ओवरी, upper pole related to uterine tube, medial surface related to uterine tube, posterior border related to uterine tube, lateral surface related to uterine tube. अरे ये क्या है? Because it's almost like ovary यहाँ पे है, almost like it is like this because this is 10 inch, pelvis is 5 inch broad. Okay. Of this 10 inches 7 लास्ट ये तो इनफंडिबुलम है लाइक अ फनेल. इसके फेमरी है, द लॉन्गेस्ट फेमरी इज ओवेरियन फेमरी विच इज अटैच टू द ओवरी. फिर देन देर इज अ 7 centimeter लॉन्ग एम्प्यूला. Seven centimeter long ampulla. Ampulla is slightly broader. And then there is a 2 to 3 centimeter long isthmus. And the last part is the intrauterine part, which almost goes into the uterus. It is 1 centimeter long. So this is 6 to 7 centimeter, this is 2 to 3 centimeter, and last 1 centimeter long is the intrauterine part, which is in the uterine wall. Uterine wall के अंदर होता है 1 centimeter. Okay, so 4 parts, medial to lateral, intrauterine. Then next is isthmus. Then next is ampulla, and last is infundibulum. 4 parts.
इसका हिस्टोलॉजी आपको सिखाया है? हाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछने नहीं चाहिए, सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन। सिखाया है कि नहीं? मेडिकल कॉलेज में सबसे गलत क्वेश्चन है, कभी टीचर को पूछना है। इस पे आपका लेक्चर हुआ है? मतलब लोग ऐसा कि हाँ या ना। यूटराइन ट्यूब का जब सेक्शन लेते हैं ना, तो ये लूमेन ऐसा बीच में है, बट लूमेन इज थ्रोन इनटू द फोल्ड्स लाइक दिस। ओके, और it is lined by ciliated epithelium. Two types of cells are there. Secretory cells called as PEG cells, PEG, pig नहीं, PEG cells, जो फ्लूइड सिक्रेट करते। क्यों चाहिए सिक्रेशन? ओवम जा रहा है ना उधर से। एंड सीलिया, सीलिया बिट टूवर्ड्स द यूटरस। देखो जेंडर बायस करते तुम लोग। वो स्पर्म बेचारे ऐसे जा रहे, स्पर्म ऐसे जा रहे और सीलिया ऐसा बीट कर रहे। कैसा, क्या बायस? दैट इज दे आर फेवरिंग द ओवम। ओवम यहाँ पे है, उसको फेवर कर रहे इधर जाने के लिए, और उसके ऐसे जोर जोर से। सीलिया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रहते हैं, यू नो दे, हाँ इधर इधर इधर, और बेचारे वो उसमें से सीलिया बीट कर रहे हैं, उसमें से इनका कंपटीशन कितना है, और मिलियंस एक ओवम उसके लिए, और वो बीच में ये सीलिया ऐसे बीट कर रहे हैं। तो सीलिया, सो सीलिएटेड सेल्स, टू टाइप्स ऑफ सेल्स सीन इन द एपिथेलियम ऑफ द यूटेरियन ट्यूब, सीलिएटेड सेल्स and secretory cells. Secretory cells are also called as PEG cells. Okay, so this fertilization happens in the ampulla. ये जो 7 सेंटीमीटर का स्पेस दिया है, that is for the fertilization, and then it comes here. It has to move fast actually. Gender bias नहीं है। Sperms के पास flagella होता है, which is more longer than a cilia. Ovum doesn't have it. So after fertilization, it has to reach the fundus, and in the posterior wall of the fundus is the normal site for implantation. तब तक ये secretory cells, PEG cells, इनको नरिश करते हैं। यहाँ का diameter is very small, millimeters में होता है एकदम lowest intrauterine part का। So before it grows, it has to reach the fundus, नहीं तो फिर it leads to ectopic pregnancy, okay, tubal pregnancy, then it bursts, the tube bursts, it's a medical emergency, okay. So that's about the uterine tube. What is the development of the uterine tube? Ununited part of the paramesonephric duct. What is the development of the uterus? United part of mesonephric duct. Shruti, what is the development of the uterine tube? Ununited part of the mesonephric duct. So you are with me on this? Clear? Okay. So supports of uterus बाकी है and applied anatomy. What are the 4 parts? Shruti बोलो 4 parts of the uterine tube. Lateral most क्या है? Lateral most is infundibulum, then ampulla, then isthmus, then intrauterine part. Okay, thank you, sit down. आपके लाइफ में भी आपने देखा रहेगा कि आप कुछ लोगों को अपना सपोर्ट समझते हो, और टाइम आने पे समझता है कि दे आर फॉल्स सपोर्ट्स। समय आने पे समझता है कौन अपना है और कौन पराया। सो देयर आर ट्रू सपोर्ट्स ऑफ द यूटरस एंड
false supports of the uterus. ओके जो बड़े बड़े बातें करते हैं, मैं तुम्हारे लिए हूँ, तू तेरे लिए जीऊँगा, तेरे लिए मर, फॉल्स सपोर्ट्स. ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटरस, बड़े बड़े बातें करे. ब्रॉड लिगामेंट इतना लगा हमको, इतना उसके बारे में पढ़ा, बट वो फॉल्स सपोर्ट है. वसाइको यूटराइन फोल्ड, पेरिटोनियम जो ब्लैडर से यूटरस पे जा रहा था, वसाइको यूटराइन फोल्ड, फॉल्स सपोर्ट. रेक्टो यूटराइन फोल्ड, फॉल्स सपोर्ट. ये सारे पहले मैंने फॉल्स सपोर्ट बता दिए. ब्रॉड लिगामेंट, फिर वसाइको यूटराइन फोल्ड, रेक्टो यूटराइन फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम. ट्रू सपोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, muscular and ligamentous. Okay, amongst the muscular support, the first one is perineal body, to which 10 muscles are attached. होय कोई माइक अलाल जो बता सकता है 10 मसल्स कौन से? बल्बोस्पॉन्जियोजस 2 साइड के, 2 बल्बोस्पॉन्जियोजस, 2 सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाए, 2 डीप ट्रांसवर्स पेरिनाए, लिवेटर एनाए दोनों साइड के, फिर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड लॉन्जिट्यूडनल. वेरी. So all these 10 muscles are held together by the perineal body. Perineal body cut, खेल खत्म, prolapse चालू हो जाता. Then pelvic diaphragm. Our times we used to write the third one as urogenital diaphragm. अभी urogenital diaphragm ही निकाल दिया आपके टेक्स्ट बुक में से, देखो अगर है तो. यूरोजेनाइटल डायफ्राम है तीसरा, जस्ट चेक, somebody check and tell me. यूरोजेनाइटल डायफ्राम, कौन चेक कर रहा है? कोई कर, इंद्रायणी चेक. But it is always better to write the urogenital diaphragm. Now coming to the secondary supports, प्राइमरी सपोर्ट्स बट मस्कुलर. उसमें सॉरी, जैसे मैंने अभी बोला ना वैसे ही लोग गड़बड़ करते हैं. ये प्राइमरी सपोर्ट्स आर द ट्रू आर प्राइमरी सपोर्ट्स एंड फॉल्स आर सेकेंडरी सपोर्ट्स. प्राइमरी में 2 है, मस्कुलर एंड लिगामेंटस. देन लिगामेंटस सपोर्ट्स में we first thing talk about is this, the uterine angles, the 2 angles. दोनों जो एंगल थे ना, एंटी वर्जन एंटी फ्लेक्शन, दैट इटसेल्फ इज अ सपोर्ट. एंड दिस एंगल इज मेंटेन्ड बाय 2 of the ligaments which I am going to talk. So why this angle comes under here is because it is maintained by the ligaments. Running from the cervix to the lateral pelvic wall is one ligament called as the transverse cervical ligament. तो सपोज ये सर्विक्स है, तो वहाँ से सर्विक्स के दोनों साइड से लैटरल पेल्विक वॉल पे जाता है ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट. उसका दूसरा नाम है मैकेंड्रॉट्स लिगामेंट. वो स्पेलिंग आप देख लेना भाई, मेरे लोग अपना अपना नाम दे देते हैं और हमको स्पेलिंग बाय हार्ट करना पड़ता है. ओके, मैंने कैसे तो एक बार बोल दिया, बस दूसरी बार भी बोलने को मत बोलो मुझे. ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट. देन
there is a ligament which runs from uterus to sacrum. So this is transverse cervical uterosacral ligament. Uterosacral ligament. Posteriorly. Okay. Then round ligament of uterus. तो राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस ऐसे खींचता है, यूटेरोसेक्रल लिगामेंट ऐसे खींचता है जिससे ये दोनों एंगल मेंटेन रहते. सपोर्ट्स ऑफ ब्लैडर, we had spoken about some ligaments running from prostrate to the pubis, puboprostatic. In females there are pubocervical ligaments which is support of the uterus, pubocervical ligaments. Okay, so these are the ligamentous supports. So ये चार आप पहले लिख सकते हो, पांचवा you can write as angle. Angle which is caused by these ligaments also. Not caused by the ligament, angle is there, maintained by these ligaments. Uterosacral उसको पीछे खींचेगा ये पोर्शन को, और राउंड लिगामेंट आगे खींचता है. Okay, so what are the supports? True supports are primary, secondary. Primary supports में muscular, ligamentous. Muscular are 3: pelvic diaphragm, urogenital diaphragm, perineal body. लिगामेंटस देखो कैसे याद रखना है, एक साइड पे ट्रांसवर्स, आगे प्यूबोसर्वाइकल, पीछे यूटेरोसेक्रल. एक एंगल तो है ही, एक ही खाली ऑड है, वो है राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस. ओके, नाउ लास्ट 5 minutes आई विल जस्ट कवर द ओवरी. Ovary development is from the genital ridge. I have already taught you that ovary is there in the ovarian fossa, located in the ovarian fossa. Now suppose this is the ovary. In the ovarian fossa, which is there in the lateral pelvic wall, now these are the internal iliac vessels. This is the anterior and this is the posterior border of the ovary. यहाँ से वो सुपीरियर वसाइकल आर्टरी आता है और उसका एक पार्ट है ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी. ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी. Obliterated umbilical artery forms the anterior wall of the ovarian fossa. Internal iliac vessels, they form the posterior wall of the ovarian fossa. Also running like this are the ureters going to the urinary bladder, which are there in the posterior part of the ovarian fossa. So ovarian fossa anteriorly lined by obliterated umbilical artery, posteriorly by ureter and internal iliac vessels. Laterally it is related to the lateral pelvic wall. And एक चीज जो मैंने आपको 6 महीने पहले सिखाई थी, वो चुंदरी दे देतीस का, म्हणजे तसं मी तिथं पंखा बंद करून अटकवतो स्वतःला. ऑब्चुरेटर नर्व. ऑब्चुरेटर नर्व जब हमने पढ़ा था तो बोला था इट पासेस इन द lateral wall of the ovarian fossa and then it leaves the pelvis by passing through the obturator foramen. इसके लिए a mild enlargement of ovary on the lateral side may press upon the obturator nerve. Female may complain of pain along the medial side of the याद आ रहा है. Thank you. Cancel, plan cancel. Okay, so lateral wall obturator, no. Lateral pelvic wall with obturator, no. Anteriorly obliterated umbilical ligament, okay. Ovary has 2 poles. Now things have become easy for me.
अपर पोल एंड लोअर पोल. बॉर्डर्स का रिलेशन इस सेम है. एंटीरियर बॉर्डर रिलेटेड टू obliterated umbilical artery, posterior border related to things forming the posterior margin of the ovarian fossa. Medial surface, lateral surface. Medial surface will be related to the uterine tube. Okay, lateral surface will be related to the pelvic wall and obturator nerve. So ovary has two surfaces, medial, lateral. Two poles, upper, lower. Upper pole is slightly lateral. What is attached to the upper pole? Infundibulopelvic ligament, suspensory ligament of the ovary. Vedant, what is the content of the infundibulopelvic ligament? Ovarian artery. Vedantच्या बाजूचा मुलगा. What is attached to the lower pole? Ligament of ovary. Where is this attached ligament of ovary? Angle of uterus. Okay. So Vedant, what is this? What is this? What is this ligament? Infundibulo. काय झालं बोल ना, नाराज आहे माझ्यावर. What is this ligament? Infundibulopelvic ligament. What is the other name for it? Suspensory ligament of ovary. What is its content? Ovarian artery. तो ये ऐसे ओवेरियन आर्टरी आता है और एक ब्रांच देता है. ये किसके लिए जाता है ये ब्रांच? राहिल, ये ब्रांच किसके लिए जाता है? इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट में से वो ओवरी को सप्लाई करता है और एक ब्रांच देता है. खुशी, lateral 1/3 of the uterine tube, and medial 1/3 of the uterine tube is supplied by, got orientation. ये यूटराइन ट्यूब है, ये यूटराइन आर्टरी है जो उसके मीडियल 2/3 को सप्लाई करती है. और ओवेरियन आर्टरी विच इज सप्लाइंग द ओवरी गिव्स अ ब्रांच विच सप्लाइज lateral 1/3 of the uterine tube. Got it? Okay, ठीक है, thank you. Now cut section also I have already drawn for you. Anterior wall of the broad ligament, posterior layer of the broad ligament. What is this? राहिल के बाजू वाला लड़का. What is this? ये क्या है? Meso ovarium. Sit down. So inside this is the ovary. Okay. Now I am asking some questions. What is this? What is this? What is this? It's a cut section, transfer section. This is obliterated umbilical artery. Anterior, ये transfer section है, right? So this is the anterior, this is the posterior border. So things forming the fossa. क्या है ये? और ये क्या है? यूरेटर. फिर वो पीछे क्या है? और इधर मैं एक डॉट निकालता हूँ, ये क्या है? ऑब्चुरेटर. So laterally obturator nerve, anteriorly obliterated umbilical artery, posteriorly क्या है? Ureter. Okay, so let's go and revise the ovary fast. Ovary is slanting in a nulliparous female and horizontal in a multiparous female. Even cervix in a nulliparous, it is round. Cervix external os, and in multiparous it is horizontal if she has given birth through the vaginal delivery. So ovary has lower pole, upper pole, anterior border, posterior border, medial surface, lateral surface. चलो एक एक रिलेशन बोलो. वेदांत, upper pole of the ovary relation.
end of infundibulopelvic, lower pole of ovary, ligament of ovary, samarth, lateral surface of the ovary related to medial surface is related to uterine tubes. Actually uterine tube मैंने बोला ना ऐसा ऐसा जाता. Okay, sit down. Last bench शेवटचा. हां उभा राहा. Anterior border, posterior border. Anterior border related to obliterated umbilical artery, which forms the anterior margin of the ovarian fossa. Posterior border related to. Okay, thank you so much.